Hello guys, welcome back to my channel Nora's Kitchen, and today we have brought you another new recipe, that's Nutella buns. Today we are going to make Nutella buns, so let's get started. Here we have 1 cup of all-purpose flour, we have 1 tablespoon oil, 1 tablespoon sugar, 1 tablespoon milk powder. Here we have 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon yeast, and we have 1 cup of water, and we have Nutella, and this is the cup measurement that we have taken for today's recipe. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आपका बहुत स्वागत है नूरास किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं न्यूटेला बंस। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या रेसिपी है। हमने यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया है। यहाँ हमने 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच शक्कर चीनी, 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 छोटा चम्मच ईस्ट ले लिया है। और हमने ये कप का मेजरमेंट लेके हमने 1 कप मैदा लिया है, और हमने 1 कप जो है पानी का ले लिया है, और ये है न्यूटेला। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमें आटा कैसे गूंदना है। सो फर्स्ट वी नीड टू knead the dough. So let's get started. So here we have 1 cup of all-purpose flour. We're going to add baking powder. हमने पहले बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया है। ये मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। This is the milk powder. शुगर चीनी, ये है 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 बड़ा चम्मच ऑयल, तेल और ईस्ट। अब हम इसे पानी से अच्छे से इसे गूंद लेंगे आटे को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। So this is the way we need to knead the dough nicely. Keep on kneading until it's very smooth textured. तो हम इसी तरह आटे को गूंदते जाएंगे जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। So ये आप देख सकते हैं हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। Our dough has been ready. As you can see, it's nice and smooth. अच्छे से हमने आटे को गूंद लिया है। हमने आटे को ढक दिया है, और हम अभी इस आटे को रख देंगे, या तो हम सनलाइट में रखेंगे इसे, या हम इसे ओवन में रख देंगे 1 घंटे के लिए। So we are just going to keep this bowl for 1 hour in oven or in the sunlight. Okay guys, so we had kept the dough for 1 hour, so now it's nicely raised. So now we are going to start making the Nutella buns. तो हमने आटे को रख दिया था 1 घंटे के लिए, और आटा अच्छे से फूल गया है। अब हम बनाएंगे Nutella buns। तो पहले हम आटे को 2 हिस्सों में हमने कर लिया, 1 हिस्सा ले लिया। So we have taken 1 part the dough, and now we are going to roll it into a circle. Nicely roll it into a circle. Keep adding the dough. Keep adding the flour to make it smooth. So here we can see the dough is ready. Now we are going to make the small circles out of it. So we had just taken a small bowl, and we are just going to cut it into a circle. So it's much easier and faster. तो हमने एक छोटा सा बोल ले लिया था, और हम उसी से जो है हमारे सर्कल्स बना रहे हैं। ये हमने 4 सर्कल्स बना लिए हैं। अब हम इसमें न्यूटेला डाल के इसे रोल करके बंद करेंगे। Okay, so here as you can see we have added the Nutella
and now we are going to make it like a bun. We're going to close it. Going to close the dough. As you can see, we have made a circle out of it. अब हमने न्यूटेला डाल दी है सब में और हम इसे अच्छे से बन की तरह इसे राउंड करके बना लेंगे। सारे बन्स को इसी तरह हमें बनाना है। ये देखिए, हम इसे अच्छे से सारे एजेस जो है उसके जो पूरे सर्कल को इस तरह अच्छे से हम इसे बंद कर लेंगे। जेंटली हमें इसको आराम से बंद करना है और इस तरह से हम सारे बन्स बना लेंगे। Guys, so our Nutella buns are ready to go in the oven. So we are just going to add milk over the buns. We are not adding egg on it because, as I also told you in earlier video, that if you use the egg, the cover of the croissants or the buns, it becomes very hard. So we are using the milk over it. तो हम अपने buns के ऊपर milk लगा रहे हैं। हम इस पे अंडा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अंडे से जो है वो कवर हार्ड हो जाता है। तो हमने जो है इस पे दूध लगा दिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा दूध वो कर देंगे, लगा देंगे। और हमने ओवन को प्री हीट किया था 20 मिनट्स के लिए, हमने प्री हीट कर लिया। और अब हम इस बंस को बेक करेंगे तकरीबन आधा घंटा 140 डिग्रीज पे। So we have already preheated our oven for 15 to 20 minutes and now we are going to bake the buns for about 30 minutes at 140 degrees Celsius, not more than that. So it should be 140 degree. So let's put the buns in the oven. So here the buns are into the oven. So we are going to bake it for 30 minutes on 140 degree Celsius. Okay guys, so as you can see, our buns are ready. The Nutella buns are ready. And we have baked it for around less than 30 minutes. So just keep checking for your buns. It just has to turn this golden color. And the buns are ready. तो हमारी जो Nutella buns हैं वो बिल्कुल ready हो चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। Okay guys, so we'll open one of the buns and show you. So you can see how beautifully the Nutella has melted in the bun and the buns are ready. So if you like this recipe, please share, like, comment and subscribe to our channel Noura's Kitchen and don't forget to press the bell icon. तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल को आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ज़रूर इस वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह अब हम आपको मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।